Hello, viewers. Good evening. Welcome back to this 24th episode of Commodities Insights, Trends, and Forecast series. As we mentioned in every session, every Thursday at 4 p.m. at ICICI Direct, we dedicate 1 hour for commodities. So every Thursday we come up with different topics. जैसे ये भी series चल रहा है Commodity Insights, Trends, and Forecast. First week of every month, we come up with the basics of commodity derivatives, like what is basically commodity derivatives, kya market timings, yeah, what are the contracts available. So whoever is a beginner to this market, they can attend those sessions and understand commodities. Also, ICICI direct perspective कैसे trade करना है वो सब topics पे discuss होता है उस session में. On the other Thursdays, we come up with this series, Insights, Trends, and Forecast. So आज हम 24th session में हैं. So without further delay, let's enter into the session. I am Arvind Jinka, Product Manager for Commodity Derivatives at ICICI Direct. And my co-host is Anup Sahu, Research Analyst for Commodity Derivatives at ICICI Direct. So ICICI Direct में जो भी research reports जो regularly publish होते हैं daily, morning, evening, weekly, monthly, or even the special reports, तो सब में Anup Sahu and Saif Mukadam are the research analysts who work on those reports. So today we have him also with us. So I'll just share my mind map as usual and take you through the topics that were covered in the last 1 week, that had happened in the last 1 week. So as you can see here, the first major topic is the launch of electricity futures. So what is this? MCX में Indian commodities market में electricity futures recently launched किया गया है. So different from other commodities where the prices are derived from the international exchanges, gold, silver, crude natural gas. वो सब international exchanges से जो prices है वो derive करते हैं. We are like India basically being a price taker for majority of the commodities. But the electricity futures का जो spot market है, that is completely the Indian spot market. For example, आप IEX में IEX Indian Energy Exchange उसका website में जाके आप spot prices देख सकते हो, जहाँ पे DAM डे अहेड मार्केट करके आपको spot prices मिलेगा. So based on that, Indian spot electricity market only, these electricity futures are being developed. And just let's see कि क्या contract specifications क्या है. This is the MCX site. You can just open mcxindia.com and वहाँ पे ये ऊपर products एक section रहता है, उसके अंदर there is this electricity under energy section. So ये open करके आप देख सकते हो, यहाँ पे electricity का product leaflet दिया हुआ है. There is electricity analysis, analytics दिया हुआ है. There is also overview on the electricity details. Factors influencing the market. So multiple points आपको electricity समझने के लिए दिया है. We'll just quickly go through the contract specifications and approximately कितना funds चाहिए होगा आपको वो भी समझ लेंगे. So basically this is electricity is a monthly contract. So contracts are available for all 12 calendar months. The contracts are listed for current month and next 3 months. So basically these electricity future contracts expire every month. And the last trading day, you should understand, usually business day immediately preceding the last calendar day of the contract expiry month. So what it says is the working day which precedes the last calendar day. So last calendar day can be a working day or a non-working day. It can be a Saturday, Sunday, or Monday, any day of the week. So last calendar day, say 1 working day before is when the contract expires. So that is the expiry. And trading days is as usual Monday to Friday. The trading sessions are 9 a.m. to 11:30 or 11:55 p.m. as is the commodity market timings. But on the last trading day, you should understand electricity futures will close at 12 p.m. only on the day of expiry, which is the last trading day of electricity futures. It will close at 12 p.m. only. But on all other days during the trading days, you can trade from 9 a.m. to 11:30 or 11:55 p.m. as usual. So and this electricity is basically a cash settled contract similar to crude oil and natural gas, the other energy commodities which are cash settled contracts. Electricity futures at MCX is also a cash settled contract, and the trading unit or the lot size for this is 50 megawatt hour. So just for you to give an understanding, like relate करने के लिए बताता हूँ. So all the electricity bills that we pay in our households, तो वहाँ पे आपका बिल के साथ कितना यूनिट्स यूटिलाइज किया एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का वो भी मेंशन किया रहता है.
So we speak in terms of units. How many units of electricity has been consumed? So ये जो unit है, one unit is 1 kilowatt hour. तो यहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट आपको दिख रहा होगा मेगावाट आवर टाइप के. बट व्हाट वी सी इन आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज वन यूनिट विच इज 1 kilowatt hour और 1000 watt hours. सो 1 kilowatt hour इज वन यूनिट. सो हमारा हाउस होल्ड्स में यूजुअली हम 100 यूनिट्स, 200, 250, 300 यूनिट्स, अप टू 500 यूनिट्स, अगर बिगर हाउस होल्ड्स तो 500 यूनिट्स तक भी यूटिलाइज करते हैं. करेक्ट. सो वन यूनिट इज 1 kilowatt hour. 1000 units or 1000 kilowatt hours is equal to 1 megawatt hour. So अब ये समझ सकते हो. So 50 megawatt hour is the lot size of this particular contract. And tick size क्या है? मतलब आपको price कैसे, price quote how it is given, it is at rupees 1 per megawatt hour. So 50 megawatt hour is the lot size and the price quote is at 1 megawatt hour. 1 megawatt hour का आपको price मिलेगा. So 1 rupee price movement will give you 50 rupees profit or loss because it's, the lot size is 50. So that is the basic contract specifications. आपको अगर और details में चाहिए तो you can just get into this site on MCX India.com website and you can check more details about this contract. So whatever trading account you're using, log in into your accounts, respective accounts, and search for electricity, and you can see the price quotes. So currently above it is trading at above 4,500 rupees per megawatt hour. So अगर 50 megawatt hours का lot size है, the contract value will become about 2,25,000 rupees. And the margin required is also approximately 10%. So आपको कितना देना होगा per lot के लिए? 22,500 rupees is the margin that you will have to give. So अगर one lot आपको electricity में trade करना है, start करना है, so minimum fund that would be required is approx 22,500 or approx 25,000 is what required. So that is with respect to electricity futures. There are good volumes. There is more than 700 OI currently. That is 700 contracts are currently being traded in live at the MCX exchange. So वो सब details market watch section में आप MCX site में जाकर देख सकते हो. There are good volumes. The contract is really trading well, so you can really take participation in that based on proper fundamental and technical information about the electricity futures. Anyhow, going ahead to discuss about the news that had happened, the news and developments that happened in the last 1 week. एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक रिपोर्ट आया था, and then when I said the World Gold Council report, you'll be able to answer this question: which asset class has given the highest return in H1 CY25? H1 CY25 मतलब कुछ नहीं, first half of the calendar year 2025. मतलब इस साल में जनवरी से लेकर जून तक, from January to June, the first 6 months में, which asset class has given the highest returns? You can also put your answers in the chat box अगर आप involve करना चाहते हो. Is it stocks? Is it any fixed income asset? Is it gold? Is it silver or any other financial asset you think? So World Gold Council का report है, and it says gold had given 26% returns in just first 6 months of calendar year 2025. The report also says that in the second half of this calendar year, second half may also trigger another 15% returns, but 15% or 15% returns भी आ सकते हैं owing to possible geo-economic tensions. So जो geo-economic tensions क्या बोल रहे हैं? There's nothing but this trade tensions which might come up with because of the tariff scenario that Trump has been talking about. अगर टैरिफ्स की वजह से और रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से, so एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के ऊपर और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते जाएगा. So such geo-economic tensions, if they continue to happen in the future, if it happens more, so in such scenarios we can see like up to 15% returns more in gold. So in general, अगर economic and financial conditions और भी deteriorate हो रहे in the upcoming 6 months also in this year, then we can see another 15% returns. Otherwise, in normal scenarios, from this position we can see another 5% increment, probably another 5% returns from gold, probably. But if the things are going well, we have been seeing US numbers. However, last CPI data में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, but overall inflation numbers seem to be cooling down.
from US as well. So agar if the economy starts to perform well, if there is not much of geoeconomic tensions, इतना अगर नहीं होंगे जितना हम expect कर रहे हैं, and if things are going well, and if investors are moving to more riskier assets like equities, then the returns might go down as well. Then there might be some negative returns. Overall, कुछ around 11 to 15% overall returns may दे सकता है to for the entire calendar year. But however, currently 26% returns to gold दिया है already in the first 6 months of this year. Over to you, Anup. आपको क्या बोलना है इसमें? Can we see more returns from Yes. gold here now? Yes, see, I think last week भी हमने बात किया था इसको लेके, and we are in a view like it will remain in a range for some period of time. Even we were expecting some correction, because see, psychological level as we see, $3,500 is a very strong resistance right now. And नीचे के साइड में मैंने तो आई थिंक लास्ट वीक 30 to 50 ही बोला था. अगर 30 to 50 ब्रेक होता है तो थोड़ा हम करेक्शन देखेंगे. आपको मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ जो स्पॉट गोल्ड है, सो आपको थोड़ा बेटर आइडिया आ जाएगा हाउ इट इज. यस, ये देखिए इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है ये, एंड आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है. ये मैंने आपको जस्ट स्टडी के लिए बॉलिंजर बैंड्स का यूज किया है, तो आइडिया आ जाएगा आपको कि हाउ इट इज बीन, कितना रेंज में है अभी. ओके, मार्केट में जो बायस था या फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज थे थोड़े रिजॉल्व हो गए हैं. ओके, ओनली ट्रेड अनसर्टेनिटीज है, उसकी वजह से हम लोगों ने वोलेटिलिटी देखा है प्राइसेस में. हाँ, जैसे कि ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रम्प, उनकी तरफ से every now and then there are some tariffs for each and every countries. जैसे जैसे 1 तारीख तक आता जाएगा तब तक हम ऐसे ही मूवमेंट देखेंगे. ओके, और ये मंथ एंड में एज आई मेंशनिंग फेड की पॉलिसी है जिसमें कि रेट कट के चांसेस तो नहीं है. ओके, सो आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है. बॉलिंजर बैंड्स मैंने यूज किया है. आप देखिए ये हायर बैंड जो है 3375 3380 के आसपास आके वो फिर से लास्ट 2-3 डे से कंसोलिडेट कर रहा है. अभी हाँ, अगर फिर से 3300 ब्रेक होता है तो अगेन 3275 3280 का रेंज है. ये बहुत ही छोटा रेंज है. कुछ मेरे हिसाब से आप देखिए लगभग 2 हफ्ते से ये रेंज में ही है. अगर 3275 या 3250 ब्रॉडली ये ब्रेक होता है तो हम अच्छा खासा करेक्शन देखेंगे. अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो नेक्स्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशंस है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन इन द रेंज. हाँ, अगर 3375 या 3380 भी ऊपर में ब्रेक होता है तो 3440 तक का ऊपर का रेंज ओपन हो जाएगा. 3440 या 3450 आप मान के चलिए. ये फिलहाल के लिए मैं ये वीक का रेंज from today and till next Thursday I'm just expecting this broad range to continue. This is weekly chart. Just to repeat, 3275 to 3375 है ना? ये yes, 3370. yes. This is the range. ये जो चार्ट है, मैंने गोल्ड का चार्ट है, this is the weekly chart. You can see यहाँ पे ये जो बॉलिंजर बैंड है, जो इसका it is getting narrower, started to getting narrower. Okay, and broadly देखा जाए तो 30 to 40 का मेजर सपोर्ट है. ओके, 30 to 40 30 to 50 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है. अगर इफ इट विल ब्रेक तो हम अच्छा करेक्शन देखेंगे एज आई मेंशन्ड. एंड ऑन द अपसाइड 30 to 45 30 to 50 सॉरी 3450 लेवल ऊपर के लेवल अभी के लिए रेजिस्टेंस. देखिए कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वी आर एबल टू सी दैट काइंड ऑफ डायरेक्शनल ट्रेंड इन गोल्ड, बिकॉज एज वी मेंशनिंग ऑलरेडी 26% ये साल का रैली हो चुकी है गोल्ड में. ओके, दूसरा चीज जो रिसेंट यूएस के नंबर्स आ रहे हैं, जैसे जॉब नंबर्स आ गया, इतना कुछ खराब नहीं था जॉब नंबर्स. रिसेंट यूएस इन्फ्लेशन नंबर आए जो कि दिस इज थर्ड या फोर्थ मंथ जिसमें कि हमने राइज देखा है. 2.7% के आसपास आ गया. फेड का जो टारगेट है दैट इज 2%, उसके आसपास या उसके नीचे आएगा तो दे विल
that will be much easier for them to lower the rates. So ये जैसे inflation बढ़ के आया है उसकी वजह से there are chances of rate cuts are being reduced. जुलाई में तो almost 90% है, the rates will stay at current levels. In September also, September का जो rate cut है, it is right now near around 50% है. Okay, so but despite of all those inflation numbers, market is expecting कि सितंबर में एक rate cut आने के chances है. Okay, अगर वैसा सिनेरियो कुछ आता है गोइंग अहेड तो हम ओवरऑली गोल्ड में तेजी देखेंगे. अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम इट विल बी इन अ रेंज, कंसोलिडेशन का रेंज रहेगा. अभी आपको गोल्ड M6 भी एक बार देख लेते हैं. Yeah. Also, as we are discussing about the international prices, कल भी ये न्यूज आया था कि ट्रम्प might फायर फेड चेयर पोवेल. तो उसके ऊपर थोड़ी देर चल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट कुछ 1% प्राइस मूवमेंट देख लिया था हमने. एंड देन ट्रम्प अगेन नेगेटेड दोस allegations, and then prices again came down. So Yes, yeah, but those ये interest rates के ऊपर तो those बहुत those speculations are there, speculation. and the Yeah. yes, and उसकी वजह से we have seen those kind of volatility. Okay, ये आप देखिए MCX के गोल्ड प्राइसेस हैं जो कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है. आप देख सकते हैं इफ यू कैन सी 95,500 लोअर बैंड है और बॉलिजर बैंड्स ऊपर 99,000 के आसपास है. सो देखा जाए तो दिस विल बी द ब्रॉड रेंज एंड लास्ट 3 days इट इज इन अ रेंज. ओके, बिकॉज हमने देखा था जो यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स आए उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, कल फिर से थोड़ी बहुत तेजी हमने देखी, बट आज अगेन इट इज डाउन. ओके, एंड डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी रिकवरी है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी मच इन अ साइडवेज ट्रेंड. अगर आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कोई अगर देख रहा है तो आई वुड से 97,000 सपोर्ट है. अगर ये ब्रेक होगा तो ही हम करेक्शन देखेंगे. Broad range 95,500 and 99,000. This is the broad range. अगर एक्सपायरी है ऑप्शन में किसको ट्रेड करना है तो वो 99,000 का कॉल बेच सकते हैं और नीचे में 95,000 का पुट भी बेच सकते हैं. ऐसा आप ट्रेड कर सकते हैं. जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है वो स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं. Okay. And as per our gold special report जो हमने बोला था 90,500, current scenario में can we still expect that if I the think conditions we are are good? actually ये जो report I think we have published and this is for the August expiry contract only. Correct. So yeah, till because the movement that we were expecting it has not happened, and yes, जो 99,000 के आसपास जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, अगेन इट केम नीचे ही आ रहा है. एंड बट क्या है ना, मेजर सपोर्ट जो 95 का है वो नहीं ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे भी 30 to 50 भी नहीं ब्रेक हो रहा है. सो मेरे हिसाब से प्राइस तो कंसोलिडेशन ही करना चाहिए एंड फेड का पॉलिसी तक ओके ये रेंज चलेगा. फेड का पॉलिसी के बाद मेरे हिसाब से थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा. बट एक चीज है जो अनसर्टेनिटी है जो ट्रेड टैरिफ्स को लेके अभी भी है. ओके, सो दैट फैक्टर इज स्टिल सपोर्टिंग प्राइसेस, बिकॉज अगर वो अनसर्टेनिटी फिर से कुछ एस्केलेट होता है ओके सो वी मे सी सम लाइक गोल्ड प्राइसेस अगेन गो अप. Right. Yeah. Right. But however, जो अगस्त 1 का डेडलाइन है on Yes, this yes. reciprocal tariffs, if हाँ, और एक चीज है ये जो रशिया को 50 days का डेडलाइन दिया है इन्होंने. correct. Okay, that will be also very crucial because Right. if it कुछ और if they come with more tariff measures on Russia, okay, so then that could be also be added. Okay, because earlier they were expecting के weekend के बाद जो last weekend था उसके बाद they will suddenly announce something, but ये जो 50 days का relaxation दिया है उसमें हम लोगों ने जो गोल्ड में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, अगेन इट केम डाउन. Okay, so I think this is a phase of consolidation right now. We don't expect much more of a like bull rally in gold prices from here for next 10 days or 5 to 10 days kind of a thing. Right. Also, August 1 का if
luckily if there have been good trade deals among different economies, तो probably ये Yes. थोड़ा support levels को भी break कर सकता है. And right, I think major support level now is at 95,500. Is it so? 95,500. 95,500. 95,500 is a very strong support. Correct. So major uncertainty is around this tariffs only. This based on this August 1 deadline. So let's say अगर तब तक if the news is good, maybe gold might break this support levels. And going ahead, अगर अगर Fed interest rate भी अगर कम नहीं हुआ, then that might also bring pull gold down even more. But anyhow, let's see how things might unwind. Let's look at silver prices also. Yes, silver, I think last week we have seen a good rally, almost $39 it has crossed, and we are expecting 38 जो levels है, $38 जो levels 38 वो तो already cross कर चुका है, and एक बार देखते हैं कि how it is. Silver we are still like having a bullish view, and आप देख सकते हैं 1 second. यस, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीक में 3740 के ऊपर एंड ऑलमोस्ट 3910 तक का हाई करके नाउ इट इज अगेन मूविंग नियर अराउंड जो ब्रेकआउट था वहां के उसके आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है. सिल्वर आई एम स्टिल बुलिश, आप चाहे तो करेक्शन में इसमें बाय करके चल सकते हैं 3720 या इसके आसपास आप बाय कर सकते हैं. थोड़ा नीचे का स्टॉप रहेगा, थोड़ा सी वॉलेट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी थोड़ा दूर का स्टॉप रखना बेटर है सिल्वर के लिए. ओवरऑली आई एम एक्सपेक्टिंग $40 एक बार आ जाना चाहिए. और अगर आप ये M6 के सिल्वर देखेंगे तो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी 1,16,000 या कुछ बोला था. सो ब्रॉडली अगेन आई विल से 1,16,17,000 तक फिर से आना चाहिए. एंड अगर आपको बाय करना है तो 1,10,000 के आसपास आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं इसमें. एंड 1,07,000 के आसपास का स्टॉप रख के भी आप इसमें अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हैं. ब्रॉडली आई एम स्टिल बुलिश इन सिल्वर बिकॉज हमने गोल्ड में तो रैली देख लिया है, सिल्वर में वैसा रैली नहीं देखा है. दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें अभी भी है. सो करेक्शन में लॉन्ग करने का सजेशन दूंगा मैं इसमें सिल्वर के लिए. अच्छा, सिल्वर का क्या अभी ब्रॉड रेंज है फॉर अ वीक, फॉर नेक्स्ट 1 वीक? फॉर ए वीक 1 लाख आप चाहे तो 1,07,000 लोअर बैंड रख सकते हैं एंड ऊपर में 1,16,000 या फिर 1,17,000 तक का रख सकते हैं. ओके, 10,000 रुपीज का वाइड बैंड. यस यस, वाइड बैंड है बिकॉज आप देखेंगे इफ यू सी ये लास्ट वीक में इसका प्राइस का जो रेंज है इट इज यू कैन सी आल्सो. यस, देखिए आप 1,07,000 और मतलब 7,000-8,000 रुपीज का ब्रॉड रेंज है और ये वीक इट हैज ऑलरेडी हिट 1,15,000 एक बार हिट हो चुका है. ओके, सो आप चाहे तो अगर छोटा रेंज अगर इफ यू लास्ट देन मैं 1,09,000 बोलूंगा और ऊपर में वही 1,16,000 तक का रेंज रख सकते हैं. Okay. Okay, Yes. got it. Okay, just we'll just move it to energy specific topics as well. Yeah, energy commodity specific अगर देखेंगे, some developments that we saw in the last week is this renewed Middle East tensions. मतलब रशिया यूक्रेन सिनेरियो तो चल ही रहा है, and there recently there was this Israel Iran scenario which has gone into a ceasefire, which had cooled down. But however, अब देखें तो there is this new conflict between Druze Syria conflict which happened in South Syrian region. Actually, Druze is a group backed by Israel, and that's how Israel would also launched an attack on Damascus on the southern region of Syria. Druze को support करते हुए. But however, between yesterday and today, there has been a ceasefire between these two, between this Druze group and the Syrian government.
However, ceasefire to ho gaya, over 250 people have been killed. But however, this scenario has come to a ceasefire. But this Druze Syria region is not primarily, it's not a major oil exporting region, but however, it's in among between the places which are like between Iraq and Lebanon, etc. So, however, अगर इसराइल का जो अटैक हुआ था on Damascus, that was a major step. So ऐसे scenarios again escalation में भी जा सकते हैं which can impact the crude oil natural gas prices. So that's how that was one scenario that happened in the last week. Then this Trump's announcement of delivering Patriot missiles to Ukraine. So Trump had announced like delivering these missiles to Ukraine, and simultaneously had also warned Russia of 100% tariffs that Anup had been mentioning, 100% tariff unless there is a ceasefire within 50 days. So 50 days के अंदर अंदर अगर कुछ ceasefire decide नहीं हुआ रशिया यूक्रेन के बीच में, then Trump said there might be chances of 100% tariffs on the Russian exports. So अगर Russian exports पे फिर से ये tariff scenario अगर आएगा, then this will have a major impact on the oil and natural gas exports from Russia. तो तब oil prices को बहुत बड़ा support मिल सकता है. So these were some things, some developments with respect to energy commodities, developments that would impact energy commodities to a major extent. And we've also been seeing the severe floods in Texas. News में जो देख रहे हैं, many people have been killed. Around $20 billion का damages भी हुए हैं. But with respect to commodities, यहाँ पे क्या हो रहा है? In this Gulf Coast region, so near that Florida, जो Gulf of Mexico region है, below US. In that Gulf Coast region, there is this refining and pipeline infrastructure which could be temporarily disrupted, which export natural gas and heating oil pipelines. So uska bhi there is a temporary disruption which can impact the energy prices, primarily the natural gas prices. So that is one development. And then, however, even though there are these points which have been supporting the energy prices, on the other hand, the demand for crude oil and other energy commodities have been drastically falling down. So recent जो data point आया था crude oil inventories का data, we saw with that the stockpiles have been growing a lot, and we saw 1% prices falling down. 1% prices falling down, oil prices falling down yesterday. US gasoline stock also rose by 3.4 million barrels against 1.1 million barrel drop. मतलब minus 1 million barrels में जाना था, which had given a result of 3.4 million barrels. So इतना ज़्यादा stock pile up हुआ है US gasoline stocks में. Even the distillate stocks also rose by 4.2 million barrels. Again, over 200,000 barrel rise expectation. So expectation से भी बहुत ज़्यादा stocks बढ़ रहे हैं in multiple derivatives of this crude oil stocks. So उसके वजह से we are saying that demand is actually comparatively very low, which is weighing on the crude oil and natural gas and other energy commodity prices. But let's see how it might wind up in the upcoming week. Over to you, Anup. एक बार charts भी दिखा दीजिए. What does the technical Yes. say on this crude and natural gas prices? Okay. Yes. Yeah. Last week we saw some volatility, and MCX prices almost moved towards 6,000 levels. But again, 1 or 2 day takes to come back to those levels of 5,700. ये जो चार्ट है मैं आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का दिखा रहा हूँ, जो कि बैकवर्डेशन में है, डिस्काउंट में है, 5,600 के आसपास है. ओके, बिकॉज करंट मंथ प्रीमियम में है, बिकॉज वी नो सप्लाई इशूज थे एंड सप्लाई इशूज स्टिल है. उसकी वजह से करंट मंथ में अभी भी प्रीमियम है. एंड बिकॉज ऑफ जो मिडिल ईस्ट में जो हाउदी मिलिटेंट्स है उनके द्वारा जो अटैक हुआ था रेड सी पे, बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई थोड़े इश्यूज बीच में हुए थे. ओके, एंड हमने ये जो फॉल देखा है, people were expecting US will announce sanctions on Russian oil. Okay, जो कि ब्रिक्स नेशन रशिया के जो ऑयल्स लेते हैं उसके ऊपर भी some sanction or measures will come, but they have denied it, and they have given 50 days
पीरियड टू सेटल इट आउट। उसके बाद जो सप्लाई इशू से जो कंसर्न से थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, एंड उसकी वजह से हमने प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन देखी है। नाउ गोइंग अहेड, अगर ये वीक का बात करेंगे, सो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो नाइमेक्स क्रूड आप देखते रहेंगे, इट इज इन दैट रेंज ऑफ $65 to $70। ये $5 का जो रेंज है, मेरे हिसाब से ये रेंज में ही रहेगा। आई डोंट सी इमीडिएट ब्रेकआउट और ब्रेक जो भी है, नहीं लगता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग जो सेकेंड हाफ है ये साल का, उसमें सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी। ओके, देर विल बी नो इश्यूज। ओके, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट एक्सपेक्ट, और जो भी फोरकास्टिंग एजेंट जैसे EIA हो गया, ओके, इन लोगों के जो भी रिपोर्ट्स आए, दे आर एक्सपेक्टिंग गुड सप्लाईज। वन थिंग, अभी जो सीजन है यूएस में, ये समर सीजन है, जो कि समर ड्राइविंग सीजन है। ये सीजन में यूएस में डिमांड रहता है, एंड सरप्राइजिंगली लास्ट 2 वीक से हम देख रहे थे कि जो इन्वेंट्री वीकली इन्वेंट्री नंबर्स आते थे, उसमें आप देख रहे थे कि बिल्टअप हुआ था। ओके, ये टाइम हमने देखा है पहली बार ड्रॉप हुआ है, बट गैसोलीन का जो स्टॉक है उसमें ज्यादातर हमने गैसोलीन और डिस्टिलेट्स में बिल्ड देखा है। सो दैट इंडिकेट्स जो प्रोडक्ट्स है, ऑयल प्रोडक्ट्स है, ऑयल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, उसमें डिमांड कम है। ओके, उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी कूल ऑफ हो गया था। एंड दूसरा एक चीज है, एक जो कि बहुत क्रूशियल है, जो यूएस के रिग काउंट से स्टिल लोअर लेवल है, 2 और 2.5 years के लोअर लेवल्स पे है, नियर अराउंड 445 के आसपास है ऑयल रिग्स, जो कि दैट इंडिकेट्स आने वाले दिनों में प्रोडक्शन फ्रॉम यूएस थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 13.5 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि आने वाले दिनों में दे आर एक्सपेक्टिंग सम थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बट आई वुड से $70 के ऊपर आई डोंट सी प्राइसेस टू सस्टेन, and it will again come towards $65. Same way, if you'll ask me in MCX, I don't think it will sustain above $6,000, sorry, 6,000 rupees, and it will come again towards 5,500 या उसके आसपास फिर से आ जाना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, द जियोपॉलिटिकल इशू। अभी आज अगर आपने देखा रहेगा तो नेटो की तरफ से भी देयर इज आल्सो कमेंट्री कि इफ दे दोज नेशंस लाइक ब्राजील, इंडिया एंड चाइना, इफ दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, देन दे विल आल्सो सम टैरिफ्स लगा सकते हैं, या फिर दे कैन कम विद सर्टेन मैचेस। ओके, सो अब ऐसा कुछ एस्केलेट होता है, तो अगर सप्लाई इश्यूज कुछ आती है तो हम प्राइसेस में ज्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे। बट आई वुड से MCX में आप 5,900 भी देख सकते हो, जो कि अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड नीचे में 5,450 या 5,500 के आसपास नीचे का रेंज देख सकते हैं। ये रेंज में आप ट्रेड कीजिए। अगर इसके ऊपर गया तो हम बोलेंगे कि यस, फिर से एक तेजी या बुलिश मोमेंटम फिर से आएंगे इसमें। अदरवाइज आप चाहे तो 5,900 से 5,500 के बीच में ट्रेड कीजिए, एंड इफ एनी रैली comes towards 5,800 या 5,850, then you can go for a sell. Okay, okay. 5,900 to 5,400, correct? 5,900 to 5,500. 5,500, 5,900 Yes. to 5,500. Okay. Yes, Okay. yes. That is a broad range now. Okay, and how about the natural gas prices? Yeah, natural gas is quite volatile, as you know, it's a weather commodity, and last week also we have seen prices in M6 almost hit to 70 mark. Now it is near 307, and जो कि US weather forecast आए हैं, उसमें ऐसा है कि they have mentioned next few days जो वेदर है थोड़ा वार्म रहेगा, हीट रहेगी यूएस में, सो उसकी वजह से जो डिमांड है गैस प्राइसेस में रहेगी और प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। बट आई वुड से यूएस के जो इन्वेंट्री लेवल्स है, दोज आर स्टिल गुड, एंड लास्ट टाइम कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि
इन्वेंट्री कंटिन्यूस बढ़ता ही आ रहा है। ओके, सो थोड़ी बहुत रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग स्मॉल रिकवरी टुवर्ड्स 320 या ज्यादा से ज्यादा 325 तक एक रिकवरी हो सकती है, बट हायर लेवल से फिर से करेक्शन आने के चांसेस है। 325 or 330 max on the high side, and on the lower side 290 I would say. 290 is a very strong support, so it can come till 290 also. आज इन्वेंट्री है, I would suggest आप एक बार इन्वेंट्री डेटा आने के बाद देख के चाहे तो आप it will give us more clarity how it will go from here on. Okay. Yeah. Noted. 330 to 290. Yeah, this will be the broad range. And आज का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से if you'll ask, अगर देखिए 310 के ऊपर ये नहीं जा रहा है, okay, once it will go above 310 तो डेफिनेटली आपको एक रैली दिखेगी 320 के आसपास तक। Okay. I think Yes. in our morning report as well, we gave this natural Yes. gas buy call, correct? Yes, When yes, buy call. yes, yes. Okay. Well, going ahead to base metal developments, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था ट्रम्प एक्सपेंडेड लिबरेशन डे पॉलिसी, मतलब टू फ्री यूएस फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर इंपोर्ट्स, तो जो लिबरेशन डे पॉलिसी दे रहा था। एंड August 1 is the deadline by which Trump had asked other economies to have trade deals with US, otherwise countries will see reciprocal tariffs on whatever tariffs that are already being imposed on US. सो प्राइमरली जो 50% टैरिफ्स ऑन कॉपर इंपोर्ट्स बोला है, सो उसके ऊपर हमको नजर रखना पड़ेगा व्हाट डेवलपमेंट वुड हैपन ऑन 1st of August. And other than that, on major other countries also there have been different tariffs, 50% on Brazil, 32 on Indonesia, 30 on South Africa, 20 to 25 on other countries as well. And we also discussed that US India trade deal is also probably happening, कुछ mini trade deal कुछ pass होने वाला था and all the stuff, but there have not been any major news on that. Once they're there, we'll be discussing in the next session as well. But this thing is already there, and the major thing is just 50% tariff on the copper imports. And on the other hand, there is one minor trade talk between Australia and China, which is seeking deeper tourism and export cooperation. So इसमें already Australia already exports this iron ore, coal, and LNG exports to China. But however, they're trying to improve that and bring down any possible tariffs that are already existing between these countries. So this might also support, since we're speaking about iron ore and LNG exports, so ये जो base metal prices में थोड़ा support देने के लिए भी chances है on this based on this trade talks. So over to you, Anup, on copper and aluminum. Yes, copper, I think the bull rally that we have seen, okay, जो कि 900 के आसपास क्रॉस कर चुका था, and it has cooled off because everybody was expecting tariffs, and वो जो न्यूज़ था that has been already factored in, and उसके बाद हमने करेक्शन देखा है because जो कॉमेक्स और एलएमई में जो प्रीमियम्स था बहुत वाइड हो गए थे, एंड ये जो तेजी बिकॉज सब लोग लाइक प्राइस में तेजी हो गया था बिकॉज सप्लाई टाइटनेस, इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन, एलएमई के इन्वेंट्रीज में 1 लाख के नीचे भी आ गया था। ओके, सो उसकी वजह से जो भी तेजी था, अभी ये न्यूज के बाद इट हैज बीन कूल्ड ऑफ। ओके, नाउ देयर हैज बीन सम करेक्शन, एंड आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे एलएमई में इन्वेंट्री बिल्ट हो रहा है। अभी अगर आप कल का डेटा देखेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास स्टॉक्स, कॉपर के स्टॉक्स जमा हुए हैं, एंड जो यूएस की तरफ से जो डिमांड था वो कम हो गया है अभी। ओके, सो दैट प्रीमियम इज आल्सो बीन कम होता जा रहा है। ओके, सो मेरे हिसाब से जो तेजी हमने देखा था वो अभी नहीं रहना चाहिए, कूल ऑफ आ जाना चाहिए प्राइस में। और आज आप देख रहे हैं कि 880 के आसपास है, 879 880 के आसपास है। मेरे हिसाब से ये आपको इन कुछ दिनों में 870 भी दिख जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 860 तक भी आ जाए नीचे में।
ये देखिए, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल। ओके, ये आप देख सकते हैं, ट्रेंड चैनल का ब्रेकडाउन है। एंड टेक्निकली फिल सी, इफ इट विल रिकवर, थोड़ा बहुत रिकवरी आती है तो एक बार, इन केस इफ इट कम्स, ऊपर का रेजिस्टेंस आप 890 ऊपर में मान के चलिए। 890 के लेवल्स नहीं क्रॉस होते हैं ऊपर में, तो मेरे हिसाब से 860 के आसपास आना चाहिए। कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा फ्रॉम द टेक्निक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। चाइना के Yeah. जो भी नंबर्स आ रहे हैं अभी, देखिए उनके जो ट्रेड नंबर्स आए अच्छे आए हैं। एंड बट एक चीज है, उनका जो रिसेंट जीडीपी नंबर आया लास्ट 2 क्वार्टर्स के बाद, ये पहला बार है जो कि कम आया है। लास्ट टाइम 5.4 के आसपास था, ये टाइम 5.1 के आसपास है। ओके, सो जो ट्रेड अनसर्टेनिटी या जो टैरिफ्स को लेके उसके बाद का जो इम्पैक्ट है वो अब दिख रहा है, यू कैन से दैट। एंड यूएस, सॉरी, चाइना में अभी भी जो इन्फ्लेशन है दैट इज स्टिल नॉट देयर। ओके, आप हाउस प्राइसेस ले लीजिए, ओके, रिटेल सेल्स लीजिए, रिटेल सेल्स का नंबर भी उनका अच्छा नहीं। सो मिक्स्ड बैक ऑफ इकोनॉमिक नंबर से चाइना की तरफ से। सो डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंजम्पशन डिमांड है दैट इज नॉट देयर। सो दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि प्राइसेस को तेजी से, it will resist prices to go beyond 890 in MCX. और एक चीज आई वुड से, नेक्स्ट वीक चाइना के रेट्स डिसीजन है जो कि शॉर्ट टर्म रेट्स है, दे आर गोइंग टू कीप इट एट अ सेम लेवल। आई डोंट थिंक दे विल कम विथ एनी रिडक्शन इन द रेट्स। वन मोर थिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो नंबर्स है वो भी नेक्स्ट वीक आएगा। सो across the globe if you see, the manufacturing activities is still in a contraction phase. Okay, so I don't see major that will bring any positive vibes towards metal prices. So for the short term, or you can say for the coming week also, I'm expecting prices to remain under pressure only. So अगर ऊपर prices आता है तो आप short कर सकते हैं, but I would still recommend you just maintain your stop loss. Okay. Yes, Arvind, So over to you. Yeah. so the wide range, I think it said 890 to 860, 30 Yeah. rupees range. Yeah. Okay. 890, Okay. or you can just put one or two, like 895 even, because rupee Okay. maybe, rupee volatility will be there, so that's fine. Okay. So 890 Yeah. to 860. Okay. So Yeah. let's say शायद let's say ऐसा हुआ कि अगस्त 1 को 50% टैरिफ नहीं हुआ कॉपर के ऊपर, सो वुड दैट बिकम बुलिश फॉर कॉपर? क्योंकि अभी देख रहे हैं इसमें आप जो चार्ट दिखा रहे हो ट्रेंड लाइन से See, बाहर निकल गया, इट हैज कम yes, डाउन। yes, yes, yes. See, उससे देखिए, अभी तो ऑलरेडी दे हैव प्रपोज्ड इट मेरे हिसाब से। इफ यू विल रिमेम्बर, एल्यूमिनियम में इन्होंने जब पहले स्टार्ट करे एल्यूमिनियम, स्टील और इंपोर्ट्स पे 25 लगाया था, फिर जून में फिर से 25 लगाया, टोटल 50 कर दिए। ओके, सो तो आई डोंट थिंक सो अभी इमीडिएटली ये हटाएंगे। सो अगर हटाते हैं तो सी, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तेजी आएगा, बट स्टिल आई वुड नॉट से कि, बिकॉज कॉमिक्स में तो प्राइस गिर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप मान सकते हो रिकवरी आएगी। ओके, बट ज्यादा तेजी में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके या ओके बिकॉज जो जो आना था दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन। करेक्ट। या ओके, लेट्स मूव टू एल्यूमिनियम नाउ। यस, एल्यूमिनियम आल्सो। या यस, एल्यूमिनियम देखिए, ये भी इट इज आल्सो इन अ वेरी टाइट रेंज। 246 से लेके 251 का रेंज है। आई थिंक मेरे हिसाब से देखिए, 246 अगर ब्रेक होगा तो हम करेक्शन देखेंगे। अदरवाइज प्राइस ट्रेंड में तो इतना कुछ क्लैरिटी नहीं है। इट इज वेरी मच इन ए साइडवेज ट्रेंड, आई वुड से।
wait and watch until unless it breaks this 246 levels. ओके, बिकॉज इस ये एल्यूमिनियम प्राइसेस तेजी होने का भी रीजन था। इसमें भी सप्लाई इश्यूज थे, जो कि बॉक्साइट जो है मेन कंपोनेंट है, और उसके सप्लाईज में इशू था। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने बीच में प्राइस रैली देखा था, बट since last few weeks it has been in a very very much in a tight range. मेरे हिसाब से I don't see any direction in it. I would say range bound activity रहेगा till 246 holds. अगर 246 break होता है तो definitely I am expecting correction in this. Okay, 246. Yeah, 246, and on the upside 251. This is the range. Okay, 246 to 250. Yeah. Yes. Okay, got it. And zinc and lead भी दिखाना चाहते हो? Zinc. Yes, zinc and lead एक बार देख लेते हैं. Let's see. Yes, zinc भी देखिए 262 का ही रेजिस्टेंस है. I think this is the third time, and 254 on the downside. Okay. मेरे हिसाब से देखिए अगर रिकवरी आती भी है तो ऊपर में फिर से सेलिंग आ जाती है. ओके, सो मेरे हिसाब से वो तेजी का जो मोमेंटम है अभी तो नहीं है, बिकॉज अब स्टिल दैट अनसर्टेनिटी है. कब ट्रेड टैरिफ्स को लेके सब जगह पे कंसर्न्स है. ओके, सो इफ अगर रिकवरी भी आती है, then again we may see some selling pressure at higher levels. So अगर आपको ऊपर दिखता है तो आप सेल करके कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस एट करंट सिनेरियो 262 का ही रहेगा, एंड 253, 50 या 254 के नीचे के लेवल्स हैं सपोर्ट. वो टूटेगा तो फिर हम 248 या 250 देखेंगे फिर से. Okay. Silver, sorry, lead. Lead it is mostly lead में तो कुछ इतना ज्यादा एक्टिविटी है नहीं, and still I think volumes are also being less. Yes, आप इसको 176 to 182 का रेंज मान के चल सकते हैं लेड में. 176 to 182 range. Yeah, yes, this is lead. it. ठीक है. Moving ahead. या नेक्स्ट वीक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो एज आई मेंशन्ड चाइना की तरफ से रेट डिसीजन है, जो कि शॉर्ट टर्म 1 ईयर एंड 3 ईयर के जो रेट्स है उसके ऊपर है. एंड मेन थिंग इज फेड चेयर के स्पीच है, यूएस फेड चेयर का स्पीच है. सो दैट इज वेरी क्रूशियल. एंड नेक्स्ट मोस्ट यूरोप एंड यूएस सबके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है नंबर्स आएंगे. सो दोज आर द थिंग्स दैट हैज टू बी एड. एंड हाँ, कुछ टैरिफ्स को लेके कुछ फिर से आता है तो then we can see some volatility again. Correct. Yeah. Even I was about to say these things. एक तो 50% टैरिफ्स जो कॉपर के ऊपर है उसके ऊपर एक नजर रखना चाहिए, like what would be the actual development. And even on EU imports भी कुछ 30% टैरिफ्स उन्होंने सजेस्ट किया है, so that might also get implemented on 1st of August. So टैरिफ्स के ऊपर इन्फ्लेशन में तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ था, but still that will have major say in September rate cut that we are expecting from Fed chair. But तो ये US inflation numbers पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. Then yeah, Fed meet, it is not 30th June, upcoming Fed meet. Also उसके ऊपर भी एक हमको नजर रखना पड़ेगा. We'll just see when is the next Fed meet. And then the OPEC Plus's reassessment of the August supply hike. एक तो हम last week भी हमने देखा था 548,000 barrels per day increment जो OPEC Plus ने mention किया है, that might happen in August. So we'll have an eye on that as well. So looking at other important data points, एक बार ये economic calendar में भी हम देख लेते हैं. And a small disclaimer here, whatever websites or applications we are using to show this economic calendars or the charts, none of this is for
none of this promotional activity. We're just doing it as an educational activity. So whatever sites and applications we are showing, it's only for educational purposes. So this week's numbers, if we see what we had received, uh, so India का तो inflation numbers आए थे, WPI inflation numbers forecast was 0.52% year on year inflation numbers हमने expect किया था, but actually there had been minus 0.13 change only. CPI numbers भी हमने देखा था 2.5% forecast था, जहाँ पे we got only 2.1% forecast actual values for CPI. Going ahead, Tuesday के दिन we saw Chinese GDP numbers, India's trade balance numbers, which has actually gone down by 18.78 billion. And USD का core CPI year on year, month on month numbers देखे थे. So here CPI year on year we can see 2.6% forecast था, but बढ़ के 2.7% actual number आया था. And on Wednesday, yesterday, we saw USD's PPI data, UK's CPI data, and this crude oil inventory data that we have been talking about. ये भी कल आया था. And then today we can see USD's core retail sales numbers month on month, initial jobless claims, Philadelphia Fed Manufacturing Index, and the retail sales as well from US. And tomorrow, as usual, every Friday we'll see India's forex reserves data in USD. So going at the next week, we will be able to see Fed Chair Powell will speak on Tuesday, which is July 22. So this is when the Fed meeting is there. And Wednesday, US ka existing home sales data aega, and next Thursday we'll be discussing whatever data we have. That was with respect to that economic calendar. And जो ये जो economic calendar में जो भी data points हम देख रहे थे, whatever points which were coming, Philadelphia data, manufacturing Fed data, तो वो सब समझने के लिए there is this PDF file that we have created. इसका link भी आपको नीचे description में दिखेगा. So in this key economic indicators PDF, you will be able to see what these data points mean, उसको कैसे पढ़ना है, वो सब भी आपको helpful रहेगा. For example, CPI, what CPI actually is? It is an index tracking the prices of everyday goods and services, showing the rate of inflation. So basically, CPI numbers are indirectly showing you the inflation numbers. So why it matters? It helps determine how much the cost of living is rising and impacts the wages and savings. So how to read? So rising CPI, अगर CPI ज़्यादा हो रहा है, that means inflation is going up, so which can lead to increased commodity prices as well, and especially for essentials like oil and food. So when does it release? Usually monthly around the middle of the month. So for different economies, such CPI numbers come out. So for all these data points, most of the data points उसको कैसे समझना है, कब release होता है, how it impacts the commodity prices, वो सब details आपको इसमें मिलेगा. तो इस file का description link आपको नीचे description में है. You can go ahead and check it. So these are all India indicators also. First session was US indicators, and commodity specific indicators भी आपको दिखेगा, energy specific and base metal specific indicators. So request you to go through this particular document and take informed decisions in your upcoming trades in the commodity derivatives. Anything else that you would like to add, no? Or can we close? Yeah, no, I think it's mostly all discussed. Most of the points covered. I think see, if somebody needs some trade suggestion, then I would say गोल्ड में जो स्ट्रैंगल का सजेशन दिया है वो कर सकते हैं, एंड क्रूड में भी क्या है तो आप स्ट्रैंगल कर सकते हैं. अभी 5,500 और 5,900 का ये स्ट्रैंगल कर सकते हैं क्रूड में, ये रिकमेंडेशन होगा. बट आई वुड से यस, आप स्टॉप लॉस रख के ही कीजिएगा जो भी करेंगे. Right. Okay. Until we come up with more topics next Thursday at 4 p.m. Happy trading. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.